Yes. So, first of all, Guten Abend. Guten Abend means good evening. So, Vishal, please repeat after me. Guten Abend. Gutta Ben. Guten Abend. Guten Abend. Yes. Atharva, can you repeat after me? Guten Abend. Guten Abend. Yes. Guten Abend means good evening. Okay. So, the first lecture we will see, like, how can you introduce, or introduction. So, it's like a very basic introduction. Okay. So, let's start with first one. So, this is something called, Vorstellen Sie bitte. Vorstellen Sie bitte. That means introduce yourself. Introduce yourself. Okay. Now we will see grammatical one by one, but today what I'm going to focus on, how can you introduce yourself. So this is a first session. So let us understand that how the pronunciation of the word are there. Okay. So I will tell one of the students to repeat after me. Okay. Yes, Priyanka, can you repeat after me? सर आवाज कम आ रहा है सर. Hello. हाँ अभी बराबर आ रहा है. Okay. Now Priyanka, can you repeat after me? Hello. Yes, sir. Yes. Please repeat after me. Right. Vorstellen. Wo Vorstellen. Worstelen. Now see, this V is nothing but fur, right? Fur. Okay, sir. So Vorstellen, Vorstellen. Sie bitte. Sie bitte. Vorstellen Sie bitte. Vorstellen Sie bitte. Yes. Now Vorstellen Sie bitte means please introduce yourself. Okay. So if anybody asks you, if you first meet someone else, so definitely you are going to say Vorstellen Sie bitte. That means please introduce yourself like that. Okay. Now after that, hello. Priyanka, repeat after me. Hello. Hallo. Yes. Now this is not hello. This is hello. HALLO. Hello. Okay. Again repeat. Hallo. Yes. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Gute Nacht. Gut, Gute Nacht. Now see here, N is not over there, right? So do Yes, not sir. say Guten Nacht, right? N, you are not going to add N, but you are going to add only T. So you have to say Gute Nacht. Again, repeat. Gute Nacht. Yes. So now this is good evening. Guten Abend is good evening. Guten Morgen is good morning. Guten Tag means good day. And Gute Nacht is good night. Okay. So see, now we have already started with this introduction of yourself. Now what I am suggesting, I am suggesting all of you, if you are having a notebook, please open the notebook and write down one by one, because this writing is very, very important in German language, right? So I hope that you will write everything, whatever I am teaching you online. And once we will meet offline, you are going to show me, the notebook, so that we can have we can keep some marks for the, maintaining the notebook as well. Because that is very, very important, how you are writing, right? Now you can look at this very carefully. Here I have written four stellen, right? Now see, over here, four stellan. So this V is capital. Obviously, you will say the first sentence is always capital. Fine. Now this Z, right? This Z, S is capital. S is capital and IE Z. And this bitter B is small. Right. So you have to follow this. You have to follow this. Right. Now once you will learn the grammatical part, then you will come to know, why I'm going to write capital letter, when I'm going to write capital letter, when I'm going to write what. Okay, that you will learn, one by one. But first time, whenever you are writing something on your notebook, so I'm telling you, V is capital, and this is nothing but for. So right, I'm writing it in Marathi, right? For. आपण फ लिहितो ना, फ फळ्यातला फ. So this is for, right? Or you can say F, for,
So Vorstellen Z bitter. Z S is capital. Now you can look at this. Hallo H capital, right? And this is hello only. Hello, right? H, hello. Hello nahi, hello, because A is A only, right? Now next is we have seen Guten Abend. Guten Abend. G is capital and A is capital. Guten Abend. You cannot write A as small, right? That is wrong. You cannot write A as small. You have to write A capital. Guten Abend. Guten Morgen. See this. Guten Tag. Gute Nacht. So this you can just imagine see that all these letters are capital only, right? And this capital always in German. Now in German there is a small rule, that first is like this: noun. Whenever you are writing the noun, the first letter is always capital. Let's say, for example, if I am saying mein Name, for example, let's say my name, right? So this is a noun, correct? Now you can look at this. N is capital. N is capital. This is very important. So always in German, noun we are writing capital. Rule number one. So this is first rule that we have seen. Always whenever we are going to write a noun, the first letter is capital, right? And see, we must have some, like, habit of writing like this. That's why I have told you, right? Or I'm suggesting you also, whenever you will have the chance, so please write down this. Now this is what introduction we are just noting it down. You note down in the notebook, write it down very carefully, which is capital, which is small, right? And again I'm saying, if you have got any kind of doubt at any moment, if anyone is not listening me properly, or you cannot able to hear me properly, because this pronunciation is very important, so you can ask me n number of times. Okay, okay. The first thing is very सर important. Yes. सर ते भूत नाक लिहिलंय भूत नाईटचं हा ते हा एन का नाही लिहिलंय सर एन एन का नाही दिलं ना? Because this is a grammar part, because the nacht is feminine in German. Feminine. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो ती रात्र. तर रात्र हां कशी आहे? ती रात्र ना. सो ती रात्र म्हणजे रात्र मीन्स नाईट ना. नाईट इज फिमेनाईन. फिमेनाईन इन मराठी ऑल्सो, राईट? बट वी आर नॉट रिलेटिंग दिस विथ जर्मन. म्हणजे मराठीमध्ये फिमेनाईन आहे, दॅट्स वाय इन जर्मन इट इज फिमेनाईन, असं नका पकडू. ओके शुभम? ओके सर ओके हा हा. सो दॅट इज सर येस. सर ॲक्च्युली मी ना लास्ट लेक्चर नव्हतो, तर मला ॲक्च्युली स्ट्रक्चर हे करायचं होतं, हा. कसं नाही करायचं. नाही, यू यू डोंट वरी अबाउट, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ओनली. नाही ना, ते नाही म्हणजे हा आपलं आपण काय आहे ना एक्झाम देणार आहोत आणि कसं काय ते त्याच्याबद्दल हा हा. विचारलं होतं. that you don't worry. We will I will tell you. Okay, I will tell you at the end of this session. Okay. ओके सर, चालेल. Okay. Now this is just a starting point. एकदम starting point आहे, right? So असं पकड की this is first lecture only. Okay, and you can say the prerequisites, exam कशी असणार, काय कशी असणार, everything that I will tell you. Don't worry. Okay, and obviously now this is I am recording, so this recording sessions also that you will get it. Okay, so you don't सर worry. सर सर हाँ. वो फोर्स्टलेन से में जो एस थे सर, वो कैपिटल है ना? Yes. हाँ सर, उसका रीजन बता सकते हो आप? कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि वो एस कैपिटल क्यों रहता है? हाँ, ये ना, ये अभी मैं बताता हूँ ना. सी, टुडे ओनली वी आर गोइंग टू सी सम, समथिंग लाइक ए पर्सनल प्रोनाउन. Ish, do, ere, ze, I, you, he, she, it, right? So that we will see. That's why I'm telling you, no, at this particular moment, directly don't go in grammatical part, right? First, let's have a interaction with these words. कि ये words कैसे use किया जाता है? How can you pronounce it? Only focus on that, right? Don't worry about the grammatical part. We are going to study the grammatical part in detail, right? So don't worry about it. Okay. So now you just focus on the pronunciation part. Okay, pronunciation is very important. Okay. So again, next one, let's say Shubham, can you repeat after me? Shubham? येस सर हा. माझ्या पाठोपाठ रिपीट करा. फोर स्टेलेन्स रिपीट. फोर्स्ट एन झी बिटा हॅलो. हॅलो गुटन अबेंड. गुटन अबेंड गुटन मॉर्गन. गुटन मॉर्गन गुटन टाग.
Guten Tag. Guten Nacht. Guten Nacht. Bas. So either or you will say, whenever you will meet to any one person, let's say now this is evening, right? So you will say hello, right? Guten Abend, like that. Okay. Now next one, as I, the first time, let's say again we are saying, we heist do, right? Atharva, can you repeat after me? Yes, We heist do. we heist do, correct. We heist do. And look at this beta symbol, right? This is beta symbol, right? We are writing in mathematics, right? Now this beta is nothing but S8, right? This is actually nothing but double S. This beta is same as double S. But now what happened, instead of writing double S in German, they are writing this kind of symbol. This is something called as S8, S8, S8. ये मैं देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ so that you will understand, how you will pronounce it. Asset, right? Asset उसको बोलते हैं, हाँ, अंडरस्टैंड इज एसेट. एसेट का मतलब है डबल एस. सो डबल एस लिखने के बजाय एसेट लिखते हैं, फाइन. ओके. सो वी हाइज डू मीन्स व्हाट इज योर नेम. नाउ अंडरस्टैंड दिस. डू, when I am saying do is a personal pronoun. Now here actually the meaning is what? तुझं नाव काय, तेरा नाम क्या है, right? Because I am using do. Now instead of do, if I am putting z, s is capital, so now I am writing v hyphen z, v hyphen z. Now v hyphen z means again in English it is what is your name, but in our Marathi or Hindi you will say आपका नाम क्या है, तुमचं नाव काय. Are you getting? So this you should understand, once you are talking about do means you are talking about to your friend or elder than you. And if you are talking about, the older people, the age is, they are, then you are going to say z. Okay. Or polite form of you are you are asking politely, right? So even though your friend or you, even though there is a person who is at your age, so still you will directly not say, tera naam kya hai. So you have to say aapka naam kya hai. And once you will meet each other, once you will get acquainted with each other, then you can say, right, ki yes, tera naam kya hai, तुझं नाव काय. Because now after that becomes a friendship, like that. Okay. But first time whenever you are saying, you directly never you will say that we highs too. Please understand this. This is something like etiquettes, right? So we have to follow this. Okay. So we highs do, we highs and sing, right? And then the answer will be, ish highs a Yogesh. Right. Now you can look at this, this T is at the end, EN is at the end, E is at the end. So these endings and this verb that we are going to, we are going to study this one by one. But now, what is the meaning of Heisen? Actually, this is a grammatical, it is a verb. And this is called as, to be called as, to be called as. The meaning of Heisen is what? To be called as. सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कैसा कैसा होता है मालूम है. ईश हैज अ योगेश. सो एक्चुअली इन इंग्लिश व्हाट यू विल ट्रांसलेट, आई एम कॉल्ड एज योगेश. उसका मतलब है ना, मुझे योगेश नाम से बुलाया जाता है, जैसे राजा बीजा रहते हैं वैसा टाइप का. बट जनरली इन इंग्लिश यू विल नॉट से लाइक दैट कि आई एम कॉल्ड एज योगेश. नो, यू विल से व्हाट, आई एम योगेश. फाइन. So in translation wise, if you saying I am Yogesh, fine, right? And that's why our the next type of answer will be like this. Mein Name ist Yogesh. My name is Yogesh. And the third way is Ich bin Yogesh. I am Yogesh. So this is straightforward. So any one answer you can, you if you do not want to say Ich heiße Yogesh, you can say Ich bin Yogesh. Bin means am. I am Yogesh. Fine. Or you may say mein Name ist Yogesh. My name is Yogesh. सर इश हायबा हे फॉर्मल होतं खूप जास्त. हाय झ झ हा हाय सर. झ झपल्यातला झ.
हायझर. हा नाही फॉर्मल नाही फॉर्मल होत आहे. रे नाही फॉर्मल नाही होत इन जर्मन इट इज फॉर्मल मीन्स इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ द क्वेश्चन इज asked to you ना वी हायझनझी सो यू मे से इश हायझे योगेश फाईन ओके. पण ते व्हॉट एव्हर यू आर सेइंग एक जास्त फॉर्मॅलिटिकल म्हणजे आपण जसं मी आता सांगितलं जैसे अपने पुराने जमाने हम लोग आई एम कॉल्ड एज योगेश मुझे योगेश नाम से बुलाया जाता है अभी मैंने ये मराठी में सॉरी हिंदी में ऐसा ट्रांसलेट किया मुझे योगेश नाम से बुलाया जाता है right generally but if you are saying I am called as Yogesh so it's okay in German it is only one verb ना इतना बड़ा नहीं है so you can say ich heiße Yogesh mein Name ist Yogesh ich bin Yogesh fine so here you may answer anything it is not like that you may answer anything let's say for you are going to interview let's say now you are going to interview and there if anybody is asking some director or a technical person we heis do or we heisen see definitely your answer will be ish heise yogesh because it's like a very formal right but let's say you are talking to anyone else or relative or anybody one else you can say my nama is to yogesh ish bin yogesh fine so तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो ओके सो नाउ आई सर विल परत से एकदा रिपीट करा ना ते. कुठलं काय रिपीट करू मेन नेम इज योगेश. हाँ हाँ माइन 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 नाम इस योगेश ओके अभी आपण रिपीट करूया नाव भक्ती देशपांडे इज देयर भक्ती यू आर देयर Yes, sir. हाँ भक्ती कैन यू रिपीट आफ्टर मी Yes. वी हाइस्ट डू We heist do. व्हेरी गुड वी हाइस्ट डू We heist परत do. वी हाइजन झी We heisen Z. यस ईश हाइज योगेश और ईश हाइज भक्ती सॉरी ईश हाइज भक्ती Ish heiser Bhakti. माय नाम इज भक्ती Mein Name ist Bhakti. व्हेरी गुड नाम परत Name. बोल हाँ माय नाम Mein Name ist इज Bhakti. व्हेरी गुड सर ईश फिमेल बिन तर भक्ती बायने येणार ना. नाही 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 मायने येणार नाही माइन नाम नाम इज व्हॉट नाम हे दिस इज मस्क्युलाइन ओनली नाम दिस इज नाउन हे जे नाउन आहे ना नाम इज नाउन आहे ना सो हा दिस सर. नाउन इज व्हॉट दिस नाउन इज मस्क्युलाइन ओनली सो ओके. मस्क्युलाइन नाम नाउनला तू फिमेनाइन नाही टाकू शकत ओके त्यामुळे मुलगी बोलत असेल तरी पण ती माईन बोलणार फक्त, मायने नाही बोलणार. नाही ओके. नाही नाही कारण नाम सी नाउन कुठले आहे नाउन नाउन फिमेनाइन का न्यूट्रल आहे दॅट इज ओके. सो दिस इज मस्क्युलाइन ना म्हणून मी बरोबर. माइन नाम बोलणार ओके ओके राईट. आपण घेऊ एक्झाम्पल्स घेऊ सर तेव्हा ते नेमचा प्रोनाऊन्स तो नामच होतं ना सर. नाम बिकॉज ए इज इक्वल टू आ ए म्हणजे आ आहे ऍक्च्युली इन जर्मन मध्ये कळलं का राईट इन इंग्लिश यू विल से अ और ए है ना तुम्ही अ बोला किंवा ए बोला सो देर आर टू टाइप्स ऑफ दिस लेटर प्रोनाउन्सिएशन एक तर अ आहे आय हॅव अ पेन राईट ए पेन्सिल लाईक दॅट ओके सो अ आणि ए वापरू शकतो पण इन जर्मन इट इज आ ओनली सो वेन एव्हर देर इज ए यू हॅव टू से आ सो NAME नाम ओके सो दिस इज लाईक दॅट नाव नेक्स्ट वन इज लाईक दिस वो won't do वो won't do right now this is a verb the meaning of verb is to stay so and wo means where so wo wants to where do you stay right now here it is again do that means तू कुधर रहता है तू कुठे राहतोस like that and here we are saying wo wohnen Sie where do you stay आप किधर रहते हो right so now Vishal is there Vishal सर परत एकदा रिपीट करा ना वो वुहन झी ते हा करतो ना विशाल विशाल आहे का आता आता कोण बोललं विशाल Yes, sir. हा येस विशाल प्लीज रिपीट आफ्टर मी इट्स वी आर रिपीटिंग ओनली Yeah. ओके डोंट वरी Yeah. Okay, sir. वो Wo won't wants won't wants do do. वो won't do Wo wants do. yes वो wonen sie Wo wonen sie. wonen 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 yes wo wonen sie
wohnen Sie? ओके, उसका मतलब क्या है? वेयर डू यू स्टे? इन इंग्लिश वेयर डू यू स्टे, बट इन जर्मन बिकॉज ऑफ दिस डू एंड जी वी हैव गॉट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तू किधर रहता है, आप किधर रहते हो. ओके, इज इट करेक्ट नाउ? Yes, have you understood? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Now answer will be what? Ich wohne. Ich wohne in. In is a preposition. Ich wohne in, and then you are having your name of the place. Ich wohne in New Mumbai. Ich wohne in so and so. Now, see ये समझ के ले लो. जैसे अगर मैं इधर ये बोलता हूँ ना मुंबई, आता here it let's say वसई ना. वसई is a international name, right? और it's a name. तो यू कैनॉट से वासाई, ऐसा नहीं बोल सकते, हियर यू कैनॉट से सर आपने तो बोला था ए तो ए है, ये नेम है ना, नेम ऑफ द पर्सन, राइट. सो नेम ऑफ द पर्सन रहेगा तो यू डू नॉट चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम, राइट. तो नेम का प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं ये करने का. जैसे शुभम, शुभाम ऐसा नहीं होता है कभी. ए इज आई, इसके लिए मैं शुभाम बोला, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो नेम इज इंटरनेशनली इट इज कॉमन. सो मुंबई, मुंबई तो मुंबईच, राइट. भारत, भारत मीन्स भारत, राइट. भारत बिरत वगैरह ऐसा, देर इज नो काइंड ऑफ अदर प्रोनाउंसिएशन. नाउ इफ यू आर pronouncing the wrongly, then it is wrong only, right. Then it is wrong only, right. So that's why our place, place का हम लोग कभी भी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से नहीं करते. जो है नाम वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. इधर तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ, यस यस. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. नाउ देयर इज वन मोर, नेक्स्ट थिंग, राइट. नेक्स्ट थिंग इज was lernst du, was lernst. Okay, now see ha, r is there, right. So pronunciation मध्ये you cannot say lensed. लेंस नहीं बोलने का, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में कैसे है, वो साइलेंट करके हम लोग खा लेते. इट्स अ साइलेंट, आर इज साइलेंट, सो यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट आर लेटर प्रोनाउंसिएशन. So you cannot say was lens do. No, you have to say was learns do. So R आना ही चाहिए आपके वर्ड में, right? Okay. So now again, who will say? Rachit is there. Rachit. Yes, sir. Yes, sir. Rachit, can you please repeat after me? Was Was learns learns do. do. Was learns do. Was learns do. Learns. Learns. ल ओ नहीं, ले ले. Lay. Okay. Learns, le. Because now here again I am saying e is a in German. E means a, so learns. Okay. सर हा. ह्यामध्ये जे एल आहे ते कॅपिटल आहे की म्हणजे स्मॉल आहे, कसं स्मॉल आहे, स्मॉल आहे, स्मॉल आहे. स्मॉल आहे? ओके हाँ स्मॉल है. वर्ब है ना, ते वर्ब है, नाउन नहीं है. सो इट्स ओके नॉट सर. नाउन, इट्स नॉट नाउन, इट्स अ वर्ब, राइट. वर्ब है तो वर्ब मध्ये तुम्हाला यू कॅनॉट हॅव लाईक दिस. इवन लेट्स से युअर question is starting with the verb, then you are you are writing that in capital letter. Otherwise, while in between that, you there is no need of writing in capital. So was learns do. A करायचा हा, pronunciation a. learns नाही करायचा, o नाही करायचा, a नाही करने का. learns do नाही, learns do एच करायचं. ओके, अगेन. ओके, रचित. was Was learns do. learns do. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. आता आन्सर काय येणार? लेर्न्स मीन्स टू लर्न, लेर्न्स मीन्स टू लर्न. ओके, हिअर इट इज रिटन. नाउ आन्सर विल बी इश लेर्न. रशीद रिपीट कर माझ्या बरोबर. इश Is लेर्न. learn. हाँ, नाउ यू मे आस्क, सर लास्ट का जो ई है उसका हम लोग ने ए कैसे प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं किया, राइट. नाउ जर्मन ग्रामर इज गिविंग अस परमिशन that if that e, last e, it is at the end, means this e is there at the end,
then you do not pronounce at a, but you can pronounce at a. म्हणून काय बघ, इश वोन. अदरवाइज ए असतं तर कसं आलं असतं, इश वोने. राईट, इश लेरने असं आलं असतं ना. पण जर्मनने काय सांगितलं, लास्ट लास्ट में अगर जर का ए ई है तो ई का प्रोनाउंसिएशन आप अ जैसा कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इश लेर्न. पहला ई है उसका ए, और लास्ट का जो ई है उसका अ. तो माय प्रोनाउंसिएशन इज वेरी नाइस, इश लेर्न. ओके रशीद, रिपीट कर, इश Ich लेर्न. lerne हा, आता काय येणार, डॉयच. बोल, डॉयच Deutsche स्प्राख. Sprache. डॉयच Deutsche स्प्राख. Sprache. So what is the meaning of it? Ich lerne means I am learning. Deutsche means German. Deutsch means German. And Sprache means language. Sprache means language. So you can say ich lerne deutsche Sprache. I am learning German language. Correct? Is it correct now, Rashid? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Now let's go to the next question. Okay. हे नंतर बघूया. Let's go to the next question. Okay. Now the question is like this. वो hair combs do. वो hair combs do. Right? Now Priyanka, can you repeat after me? वो hair वो हेयर combs कोम्स do. डू. Now the question is very simple. Where do you come from? Where do you come from? Right? Previously you have seen, वो wants to do na. So वो. Now there is one more question called as वो hair. See, वो का दो दो टाइप है. वो का मतलब है ओनली वेयर. वो का मतलब है ओनली वेयर. एंड वो हेयर मीन्स वेयर फ्रॉम. वेयर फ्रॉम. राइट, वो हेयर मीन्स वेयर फ्रॉम. वो मीन्स वेयर. राइट, इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा, वो वॉन्ट्स डू, वेयर डू यू स्टे. राइट, और अभी का क्वेश्चन क्या है, वो हेयर कोम्स डू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप किधर से आए हो, तू किधर से आया है, ऐसा. सो नाउ योर आंसर विल बी इश खोम आउस इश वसई खोम आउस. हाउस So and so, what is where your place? You can say ish koma भिवंडी. aus, ish koma aus bhiwandi. इश खोम आउस भिवंडी. Aus आउस. bhiwandi. Okay, okay. Now in short, now we have learned this many. If anybody he will ask you, anybody is asking you, without you are not seen the grammatical part, nothing, 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 and if anybody asks four shillings better. So at least few sentence, 3 to 4 sentence you can able to speak fluently. So now if I'm asking you four stellen Sie bitte, let's say if anybody is asking me four stellen Sie bitte, so now my answer will be hallo, guten Abend. Ich bin Yogesh. Ich wohne in Wasei. Ich lerne deutsche Sprache. Ich komme aus Wasei. राइट, सो इतना सेंटेंस मुझे बोलने को आना चाहिए. राइट, एटलीस्ट अभी के अभी. राइट, नाउ लेट्स सी. शुभम, कैन यू. स्प्राक म्हणजे काय? स्प्राख. स्प्राख मीन्स लँग्वेज. ओके. स्प्राख मीन्स लँग्वेज. डॉयच जर्मन. ओके, शुभम, कैन यू टेल. हेलो शुभम. Yes, sir. Yes, now I'm asking you four stellen Sie bitte. Hallo. हाँ, हेलो Guten हेलो. Abend. हाँ, Guten Morgen. नहीं नहीं नहीं, अरे सगळं थोडी अभी इव्हिनिंग है ना, तो एक ही बोलने का ना. यू आर इंट्रोड्यूसिंग युअर सेल्फ. Oh, आता यू आर okay. इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोडक्शनला तू सगळं थोडी बोलून दाखवणार. गुड इव्हिनिंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं. कुछ तो एक बोलेगा ना. गुटेन अबेंड तो गुटेन अबेंड. आता गुटेन अबेंड आहे ना. Okay, okay. हा, परत हॅलो. Hallo. हम्म. Guten Abend. आता याच्यातलं कुठलं पण बोल, तुला जे पाहिजे ते. Mein Name is नाम. Shubham.
परत परत mein माइन नाम. Name, हा. mein Name ist Shubham. इस्ट. Ist Shubham. इस्ट. परत. हा. Mein Name ist Shubham. हा ईस्ट बरोबर आलं पाहिजे. पण नंतर मला आता ऐकायला व्यवस्थित येत नाहीये. ईस्ट शुभम करेक्ट. नेक्स्ट ईश. Ist one in Mumbai. हा हा ईश वोन. Ist परत ईश. wohne in Mumbai. हा बरोबर ईश वन इन मुंबई. नेक्स्ट ईश Ist lern, लेर्न. ist lerne, ईश लेर्न ist lerne डॉयच das deutsche स्प्राख. Sprache. स्प्राख. Sprache. हा आता श वापरायचा श. हा स्प्राख. Sprache. हा व्हेरी नाईस. इश लेर्न डॉयच स्प्राख. Ich lerne deutsche Sprache. हा व्हेरी नाईस. इश्क. नेक्स्ट इश्क. Ich इश खोम. komm, इश खोम ich komme, आउस. ich komme aus Mumbai. वेरी गुड. इश खोम आउस मुंबई. ओके नाउ सी ये Okay. क्या होता है मालूम कि जैसे नो इट्स लाइक द एक्सरसाइज ऑफ फॉर आवर माउथ. Okay, because the pronunciation is you have to be specific about the pronunciation. Now first time it may happen that you have to speak like this sprache deutsche, like okay it's fine, starting में चलता है, लेकिन ऐसा जानबूझ के ऐसा स्ट्रेस किया ऐसा भी नहीं होना चाहिए. You may say first stellen Sie bitte hallo, guten Abend, ich bin Yogesh, mein Name ist Yogesh or ich heiße Yogesh, ich wohne in Wasai, ich lerne deutsche Sprache, ich komme aus Wasai. बस इतना सिंप्लिसिटी में आपका आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन. बिकॉज वाइल कम्युनिकेटिंग यू विल नॉट से लाइक दैट. नो इश खोम आउस like that. Okay, now this is the first time you are in, but that's why you read loudly. Reading is the best medicine while learning any kind of language. Read a lot of times, right? Next, let's say now just this, it is the addition of this introduction. So here it is like this. Ich bin in. Now semester is semester only, right? Semester. Class is class, right? Now you may say this is zwei means two. Ich bin in zwei semester class. So third ला काय म्हणतात, fourth ला काय म्हणतात. Once we will see some the numbers, how can you spell the numbers, how can you read the numbers, then we will see the numbering part. Now at this moment, just by fluke you are going to say ich bin in zwei semester class. I am in second semester class. So this is what is again addition to this four stellen beta. Okay, now yes, Atharva, can you repeat after me? Ich bin Ich bin in in zwei. zwei Semester Klasse. Very nice, very nice, very nice. You are pronouncing very correctly. Okay, now let's see what you will say. How are you? Right? How are you? Right. So there are two types of how are you. Why? Because one it is in polite form and another is like informal. Right. So for that purpose, we have got this. We get S. We get S. So we get S is common for both. But the next one is like personal pronoun. The variation, the form of personal pronoun. Now, if I am writing inan, we get S inan. आप कैसे हो? Right? Because I am asking like this. आप कैसे हो? Right? तुम्ही कसे आहात? And if I want to ask to my friend, so we get S dear. We get S dear. Means तू कसा आहेस, तू कैसा है, right? Now this is not like in the first introduction part, it is the next section. You can say, somebody will ask, if you want to ask your friend, we get as inan, we get as dear, right? We get as dear means tu kaisa hai, how are you, right? In German, in English it is how are you only, right? But in German both are different.
So let's pronounce this and let's say first complete this and then we will take I will take one by one. So next one is ich bin gut. Ich bin gut. That is the answer. I am सर good. I am good. नुसतं पण हा वी yes. गेट्स म्हणतात ना, नुसतं पण वी वी गेट्स गेटेस असं पण बोल. म्हणतात. हा चालेल ना. वी गेटेस पण म्हणतात ना. कसा आहेस? हा, जनरली आपको कारण मी ते ये बघितलं होतं. हा नाही ओके ना. वी गेटेस ओके, म्हणजे कसा आहे एवढं विचारलं तरी चालेल असं काय वी नाही. गेट्स. Right. But generally, if you want to ask, ki, to like polite form, then this inan is very, very important. ओके And that if inan is written, that's why I have given here dear also. ओके. Right. Tu kasa hai? Tu kaisa hai? Right. That subject I have put it over there. That's it. Otherwise, there is use or see there are lots of variations that you can do it also. Right. But let's say we are also this is starting point, that's why we will not get confused with the what is subject, what is noun and everything, and that's why it is written like this. You can absorb this. See, I is capital, very important. D is capital, very important. Right. Who is there? Okay. And even over here also, each been in by semester class K is capital. K is capital because class is a noun. Class is noun, right? And that's why it is very important. Here, in an I capital, dear D capital. Okay. Now there are lots of again variations like it's been good. सर Let's थर्डला say काय I am बोलतो सर? काय. थर्ड सेमिस्टर असेल तर काय बोलणार आपण? थर्ड असेल तर त्याला म्हणतात ड्राय, राईट. ड्राय ओके. ड्राय द असतो ना आपला दौतीतला द, ड्राय. या नाही ड्राय. Okay. So dry. So it's been in dry semester class, right? Like that. Okay. So it's been good. I am good. Or otherwise you may say es geht. म्हणजे आपण म्हणतो ना चाललंय, चल रहा है मेरा. It goes. In English it is say it goes. चल रहा है. But हम लोग ऐसा नहीं it goes. ऐसा कोई किसी ने बोला कि how are you? You will not say it goes or like that. But in German you have got variation. As I told you, it depends upon our choice. Or otherwise the next one is prima. Prima means excellent. Right, एकदम छान, एकदम छान. Prima. Or here it is sehr gut. Sehr gut. Very good. Sehr good means very good. Just there are a lot of variation. Ich bin gut. Es geht. Prima. Sehr gut. तो इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हो. Right, whatever you feel at that moment. And again there are lots of again different variations also, but whenever we will you will focus on the vocabulary and grammatical part, then you can add, right, n number of things. Now this is like our first, at first we are watching, listening this, how we are pronouncing. That's why I will not go for different kinds of variations. Okay. So now मधुर घरत आहे का? मधुर घरत. हाँ सर बोला ना. हाँ मधुर, रिपीट, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. हाँ, वी गेट एस इनन. वी गेट एस इनन. वी गेट एस डीर. वी गेट एस डीर. ओके, वेरी नाइस. इश बिन गुड. Sir, हाँ यस यस. sir, sorry to interrupt, sir, but can you just please repeat about that? Ich bin in zwei Semester Klasse 3. हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, इश बिन मीन्स आई एम इन zwei. Zwei means second or two. Ich bin zwei. Semester is semester. You are in this semester, right? Class means class. Class means class. Right. So one is asking, थर्ड को क्या बोलते हैं, थ्री को क्या बोलते हैं. So थ्री को ड्राई बोलते हैं. तो सेकंड को क्या बोलते हैं, ज्वाय. थ्री को क्या बोलते हैं, ड्राई. So we will see the numbers. We will see the numbering part. पूरा नंबरिंग सिखाएंगे, right from 0 से लेके 1000 10,000 like that. So there are a lot of variations of numbers. नंबर के लिए पूरा अलग सा एक्सरसाइज दी है, that we will see. Okay, so अभी के लिए आप ध्यान में रखो ज्वाय, और if you are in third, then you will say dry. Okay. So now continue with this. Madhur. Yes sir. Yes. Ich bin gut. Ich bin gut. Es geht. Es geht. Prima. Prima. Sehr gut. Sehr gut. Very nice, very nice. Okay. So I hope that again I'm repeating, I hope that you are writing it in the notebook.
right? Different things. These are something like expressions. Simple expressions are there, but this will matter a lot. The spelling is important, the capital letters is important, right? हम लोग को लास्ट में जो मैं बोल रहा ना आपको कि जो एग्जाम टाइप रहेगा, देयर वी विल हैव लाइक दिस सेक्शन, डिक्टेशन इज देयर. I will just dictate. If I am saying guten Abend, now you are going to write it down. You are to going to listen what I was spoken, and immediately you are going to write it down. So this is called as dictation exercise. Dictation is important. Listening ability. Listening ability is very important. So you have to read a lot, right? यानी जब भी अभी जैसे आज मैंने आपको फोर्थ टैलेंट से लेके अभी तक इधर तक आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया, सपोज. So this you should it we should be there, right, at the tip of your tongue. That means कभी भी आपको बोला है ना फोर्थ चैलेंज दी बेटा, फटाफट आपको ये 5-6 सेंटेंस बोलने को आना चाहिए immediately. Okay, let's go ahead with this. Okay, now let's see the personal pronoun. Let's see the personal pronoun. Okay, again I hope that you are writing. Please, आप ऐसा सोचा ना अभी ऑनलाइन है बाद में लिखेंगे, ऐसा करो मत प्लीज. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, राइट? ओके, एंड यू कैन क्रिएट अ सेपरेट नोटबुक नाउ. अगर आपने अभी नहीं किया रहेगा तो भी चलेगा, नेक्स्ट टाइम करो, राइट? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, आप लिख के ले लो. ओके, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. हाँ, ओके. सो पर्सनल प्रोनाउन. ओके, पर्सनल प्रोनाउन कैसे होता है? सो लाइक इन सिंगुलर. नाउ हियर सिंगुलर इज ए है, आ है, इसके लिए मैंने सिंगुलर ऐसा बोला. तो जनरल जर्मन में भी वो सिंगुलर ही है. एंड दिस इज प्लूरल. प्लूरल. तो सिंगुलर, प्लूरल. इन इंग्लिश यू आर सेइंग सिंगुलर और प्लूरल, राइट? सो ए आ का अ किया तो चलता है इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में आ का अ नहीं कर सकते. ओके, सो सिंगुलर, प्लूरल. तो इन इंग्लिश में कैसा है? आई, यू, he, she, it, or he, it, she. Let's say we. So I का सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या है? we. you सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या है? all of you. he, she, it, उसका प्लूरल फॉर्म क्या है? they. But apart from this, there is one more plural form of the third singular form called as polite form of you. To me, आप कैसे हो, है ना, वो like that. Okay, so that's a polite form of you is important, right? So you can just see in English also, but we cannot say how are polite form of you. In English में हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या? आप कैसे हो, how are you only ना. If you are asking to your friend how are you, if you are asking in polite formal, even though you will say how are you, right? But in English or in German we have got the difference. And here even though it is saying polite form of you, तो अपन इंग्लिश मध्ये थोड़ी असं बोलणार हाउ आर पोलाइट फॉर्म ऑफ यू, आप कैसे हो, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? सर येस, हा सर बोला. सर दे मध्ये जे से आहे ते कॅपिटल आणि स्मॉल मध्ये दोघांमध्ये रिप्रेझेंट केलंय, आणि हा. लेफ्ट सर ते साइड मध्ये दोन्ही सिंगुलर प्रोनाऊन्स करून मध्ये दाखवा ना. शी पण नाही से च स्मॉलच मध्ये, तर ते कन्फ्युजन नाही होणार का कधी? नाही 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 होणार, तेच सांगतो. ते कधी कसं नाही होणार ना, दॅट देअर आय विल से वन्स यू विल सी द वर्ब कॉन्जुगेशन. तुम्ही जेव्हा वर्ब कॉन्जुगेशन बघणार ना तेव्हा तुम्हाला कळेल की बोथ आर डिफरंट, right? Even though this z is there, this z is there, right? But the conjugation of the verb conjugation is different. जसं in मराठी if you are saying ना ती खाते, राईट, आणि मराठीमध्ये ते खातात, आणि खाते आणि खातात ना. आर यू गेटिंग इट? सिद्धार्थ, Yes, समज. yes. हाँ, हा सर. तो डिफरन्स आहे. द डिफरन्स इज लाइक हाउ यू विल कॉन्जुगेट द वर्ब कसं टाकणार, वर्ब कैसे पुटअप करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन दॅट. ओके, दॅट वी विल सी. नाउ फर्स्ट लुक ॲट ओनली द पर्सनल सर प्रोनाउन. तर याचं हाँ बोल. ग्रामर एकदम. एक मिनिट मी हाँ बोलतो. हाँ हो बोल. येस मधुर बोल. सर हा सर इकडे दे आणि पोलाइट फॉर्म ऑफ यू ह्याच्यात कॅपिटल आणि एस, कॅपिटल एस आणि स्मॉल एस असं आहे, तर त्यांचं प्रोनाऊन्सिएशन वेगळं होईल का सर, नाही की नाही नाही, सेमच जी जी राहील? तसंच होणार, सेमच होणार, सेमच ओके होणार. ओके ठीक आहे, प्लीज कंटिन्यू. तिन्ही आता सेमच आहे, झी आणि झी सेमच आहे. सर याचं ओके, ग्रामर आणि आणि मराठीच आता आहे हा एकदम. विचार, हा दुसरा विचार.
सर त्याचं ग्रामर एकदम मराठीसारखं आहे का? नाही 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 मराठी संस्कृत संस्कृतच्या नंतर सर्वात जास्त रिलेटेड कुठली माहिती आहे का? एकतर साऊथ इंडियन कुठली लँग्वेज आहे आणि नंतर मराठी आहे. राईट, ओके. बिकॉज वी हॅव गॉट लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन्स. राईट, तुम्ही बरोबर. मराठी ग्रामर तुम्ही बघाल त्याच्यामध्ये पण खूप ग्रामर आहे. राईट, हो. सो लाईक वर्ब कॉन्ज्युगेशन आहे, पोलाइट फॉर्म्स आहेत. राईट, आणि इन संस्कृत ऑल्सो यू विल फाइंड इट आउट लॉट ऑफ थिंग्स. राईट, अँड सी जर्मन पीपल आर प्रिव्हियसली आर्यन्स. बरोबर. Right, this is like a history. Right, in 1800th century, previously the people are, the Aryans only. The people were, from India, they visited to the the Poland, and after that Poland they visited to the Dutch. And Dutch तर तुम्हाला माहिती असेल. Right, and Dutchच्या साईडला, there is one, the river, and beside the river they situated. Right, and they Dutch करता करता ते Deutsch झाले. Right, and that's why the German is like Deutsch. And there are the other side of river, it is Dutch, purely Dutch लोक. Right, ते पोर्तुगीज डच लोक आहेत ना, ती डायरेक्टली पोर्तुगीज अँड डच लोक. बट वेअर एज या साईडची लोक आहेत ना, सो दे विल हॅव द डिफरंट थिंग. सो instead of putting Dutch, right, they have started to pronounce like Deutsch, Deutsch, and that's why the new name has came up, and that name was Deutsch. समजलं डॉयच कसं आलं ते? हो सर. Hello. Okay. So like this, like this. So here, and that's why you can relate. You can relate करू शकतात, but always it is not like Marathi. Always it is not like Marathi. For example, if I am saying, in Maraठी ती खिडकी आहे ना, खिडकीला आपण काय म्हणतो? ती खिडकी, बरोबर आहे? But ती खिडकी is what? The window. The window in Marathi it is feminine, but in German it is neutral. Das Fenster. Fenster म्हणतात त्याला. Fenster. In German it is called as Fenster, but it is das Fenster. Das Fenster means the window. The window. Right? But now here you cannot say की अरे मराठीमध्ये तर फेमिनाईन आहे and here it is neutral. Then how can you remember? So remembering साठी, so if I am saying, if I am asking you that you are Maharashtrian, and if you know this, तो ती ते, this, तो पंखा, ते पेन, तो दरवाजा, ती खिडकी, right? Now if I ask you, how can you remember this? So if I am asking to Madhur, let's say, Madhur, how you will remember this? Just by practice, na? Hello? सर हॅलो हाँ बोल. सर हे DAS डस म्हणाले तुम्ही, पण ए हा आ प्रोनाऊन्स करतो, मग डास नाही का होणार त्याचं? डस हा होईल ना, डास होईल ना, डास. पण डास इकडे डास करताना, राईट, डास करताना अगदी डास असं नाही करायचं. डस चालतं, डस फेन्स्टर. ओके. सो काय काय वर्डला त्यांनी मुभा दिलेले, राईट, काय काय वर्ड्सला मुभा, फक्त वर्ड साठी. जसं मी ना, आता जसं म्हणतो ना, ईश, राईट. आता ईश आहे ना, तर हाऊ विल प्रोनाऊन्स, आपण प्रोनाऊन्स कसा करतो? ईश, श करतो ना ऍक्च्युली, ईश. पण कधी कधी ते म्हणतात इक, ते पण चालतं. कळलं? बट देर आर सम सम लिमिटेशन्स ऑन इट. एक्सेप्शन्स म्हणजे काही काही गोष्टीलाच फक्त, सगळ्यालाच आपण नाही वापरत. कळलं? सगळ्यालाच आपण वापरत नाही. So it is okay, does Fenster. Okay, but I hope that you understand this, right? But now the question is, how you will remember this? How you will remember this? Because there are lots of nouns. प्रत्येक गोष्टीला तुमचं नाव येणार. If anybody wants to say I have a pen, pen, now let's say pen, in German pen is called as Fuller, right? Pen is called as Fuller, and Fuller is der means Fuller is masculine. Fuller is masculine. So now if I want to, in my mind I have to remember a lot. इवन दो इफ आय से हैव, लेट्स से इश हब, झालं, चला इथपर्यंत ठीक आहे. पण त्याच्या पुढे उसके बाद में मुझे पहले वो नाउन क्या है वो पता लगाना है. काय नाउन है? ओके ठीक है, नाउन तो मिला. तो नाउन फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, क्या न्यूट्रल है, वो मुझे पता करने का है. और उसके बाद में उसके अलग अलग वेरिएशंस भी है, फॉर्म्स है.
वो बाद में हम लोग देखेंगे, धीरे 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 देखेंगे, राइट. बट नाउ अगेन वी विल नॉट गो ओवर हियर. फर्स्ट लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्सनल प्रोनाउन. आज के दिन में हम लोग को पर्सनल प्रोनाउन टिप ऑफ टंग बैठना चाहिए. ओके, सो नाउ आई रिक्वेस्ट मधुर टू रिपीट आफ्टर मी. ओके, इश, इश, डू, डू, एर एस जी, एर एस जी, एयर एर, एस, एयर नाही, एयर 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 असते ना हवा, तसं पण हाँ चालेल. हाँ हाँ, एयर, 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 एस, 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 झी, झी, जी, वीर, वीर, ईर, ईर, झी झी. जी, जी, ओके, नाव थोडंसं आपण थोडं फास्ट एक रिदम मध्ये म्हणूया, जरा थोडंसं पाठ व्हायला. इश, डू, एर एस झी, इश, डू, एर एस जी, वीर, ईर, झी झी. वीर, ईर, जी, जी. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. ओके, अथर्व माझ्याबरोबर बोल जरा. अथर्व, Yes, येस. sir. इश, डू, एर एस झी, H, do, air, S, Z. इच, च नको म्हणू, च नको म्हणू. च इज नॉट देअर. च इज ऑब्वियसली नॉट देअर. ओके, अंडरस्टँड दिस. ओके, Okay. सो देर Ish, इज नो sure. च. एक तर श Okay. आहे, एक तर श म्हण किंवा क म्हण. क चालेल. तर जर Okay. श म्हणता येत नसेल व्यवस्थित तर क म्हण. ओके, इश, Ish, हा ओके do, चालेल, ते air, चालेल. इश, डू, S, एर एस झी, Z. Veer, ear, Z, Z. वीर, Veer, Veer. एक अरे मिनिट बाबा व्हेरी नाईस. हेडफोन्स काढतो. वीर, ईर, झी वीर, झी. हा हा, ईर. हॅलो. वीर, ईर, हा, Z, Z. ओके 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 ओके. नाव हे आता तू असं पण लिहू शकतो, वी, ई, र, म्हणजे असं आपण तुझ्या आठवणीसाठी लिहू शकतो तू, और ई, ईर. म्हणजे हा कुठला माहितीये का, दुसरा ई झाला. म्हणजे इफ यू नो द मराठी, ई, ई आई तसं ना, ई, ईर. ई लंबवायचा, ई, ई लंबा खींचने का, Yes, ईर. ear. वीर, ईर, ऐसा. ओके, हाँ Okay. थोड़ा सा फास्ट बोला तो भी चलेगा. वीर, ईर, झिझी. ओके, सो इश, डू, एरेजी, वीर, ईर, झिझी. इश, डू, एरेजी, वीर, ईर, झिझी. ओके, शुभम, रिपीट आफ्टर मी. इश, डू, एरेजी, वीर, ईर, झिझी. इश, डू, एस, जी, वीर, ईर, जी, जी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मधुर, इश, डू, एरेजी, वीर, ईर, झिझी. इश, डू, एर एस जी, वीर, ईर, जी, जी. बस ये पहला आपको बाय हार्ट करने का है, बाय हार्ट करने का है. सो दिस इज लाइक दिस इज लाइक अ चार्ट. नाउ अभी से हम लोग का क्या हो गया, चार्ट्स चालू हो गया है, चार्ट. ओके, ये चार्ट हम लोग को धीरे धीरे सीखने का है, राइट. ये एक पहला चार्ट हो गया अपना. ओके, पर्सनल प्रोनाउन का पहला चार्ट. ग्रामर ग्रामर के लिए हम लोग ने शुरुआत किया. ओके, नाउ इसके बाद में अभी डायरेक्टली हम लोग ये नहीं करेंगे. आज के दिन में हम लोग वापस ये जो बुक है, Deutsche Sprache für Ausländer, दिस बुक आई एम गोइंग टू पुट इट इन अवर ग्रुप. तो ग्रुप में अभी मैं डालता हूँ. कृष्णा दुबे सर आलेले आहेत. 1 सेकंड, मैं अभी आपके ग्रुप में ही ये डालता हूँ, सो डैट यू कैन ओपन इट फ्रॉम एट योर एंड. और अभी के लिए ओपन नहीं किया तो भी चलेगा. ओके, बाद में एक काम कर दिया, अभी मैंने डाला तो इमीडिएटली आप ओपन करेंगे, और किधर गया ऐसा ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी. 1 सेकंड ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड. लेट मी पुट द चार्जर. चार्जर लगाता हूँ. 1 सेकंड.
Yes, hello. Am I audible again? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So I open this book now. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Okay, now here A and umlaut is there, na? That's why I pronounce it as A. Huh? Okay, A means A, right? Pronunciation A is A, right? Like in German. Now A umlaut आया ना तो उसको बोलते हैं A जैसे प्रोनाउंस करते हैं. And that's why I pronounce it as like Ausländer. Okay, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Für का मतलब है for. जर्मन लैंग्वेज फॉर फॉरेनर्स. Ausländer का मतलब है फॉरेनर्स. ओके, नाउ ये बुक में क्या क्या है, पहले मैं आज खाली ये बुक में क्या क्या है वो बताने वाला हूँ. राइट, दिस इज अवर बुक. सो द बुक दैट यू विल फाइंड इट आउट इज लाइक दिस. देखो मैं वापस आई विल ओपन इट. सो ये बुक का फ्रंट पेज है. राइट, एंड द बुक विल बी, यू विल फाइंड इट आउट लाइक दिस. ओके, बट यू डोंट वरी अबाउट इट. इधर क्लिक करने का एंड कंट्रोल प्लस प्लस दबाया तो देन यू कैन जूम इट. Okay, you can zoom it like this. Okay, so now over here you can see that there are, there are a lot of chapters, but as I told you that we are going to cover the 10 chapters. 10 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. हर एक चैप्टर के पीछे देर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर. राइट, और हर एक चैप्टर में आपको नया नया ग्रामर भी सीखने को मिलेगा. राइट, सो धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, सो ये बुक में क्या क्या है. सो लेट्स से ये चैप्टर नंबर 1 है. सो लाइक डायलॉग्स आर गिवन लाइक दिस. ओके, देन देर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. यू विल जस्ट फाइंड इट आउट. ये देखो एक्सरसाइज दिया है. ओके, then you will have the, let's say, opposite zwei means two, the second chapter है, उसमें भी ऐसे dialogues है. Then we will have the exercises. So like this we will go. राइट, सो इसके लिए हम लोग को ये 10 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 52 आवर्स. यानी आज से हम लोग ने धीरे धीरे चालू किया है. ओके, सो ये बुक का बारे में आपको पता चला. राइट, नाउ दिस बुक दैट आई विल पुट इट ओवर हियर इन द ग्रुप so that you will get it. Okay, so that you will get it. Okay, whenever the you will find it, the net is good. Okay, so before that let's see something like alphabet. तो अभी हम लोग है ना अल्फाबेट ही देखते हैं स्टार्टिंग में. so that you will clear your idea, अल्फाबेट का आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा. yes, can you see this स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड. सो लेट्स सी अल्फाबेट हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग. ओके, so who will speak? Priyanka, can you repeat after me? Yes, sir. ओके, पहले बोलो आ. A. ओके, बे. B. से. C. हा, आता त आणि स आहे. हा, से. C. डे. D. ए. A. एफ. F. गे. G. हा. H. ई. E. ना आता जे है ना, जे को बोलते हैं योट. ओके, योट. तो बोलो योट. Yacht. का. K. एल. L. एम. M. एन. N. ओ. O. पे. P. कू. Q.
कू, हाँ, सी डबल ओ, कू. Ku. एर, Air. एस, S. टे, Te. ऊ, U. फाऊ, Pau. वे, Way. वे, हाँ, सादा वे, Way. इक्स. X. हाँ, आणि अभी वाई को क्या बोलते हैं मालूम है? इप्सिलोन. बोलो. Ipsil. इप्सिलोन. Ipsilon. आणि जेड को Ipsilon. बोलते हैं, जेड को बोलते हैं सेट. Set. ओके. त, स, The set. सेट. Set. हाँ, सेट. बोला. Set. येस. ते पीडीएफ व्हेरी खाली व्हेरी स्क्रोल इम्पॉर्टंट. करा ना. हाँ, खाली काही नाहीये, ते प्रोनाउन्सिएशनच आहे सर त्याला. सर जेला काय म्हणतात? सर जेला काय म्हणतात? जेला म्हणतात योट. योट, योट. जे को बोलते हैं योट. य अँड ट, योट. ओके, परत घेऊया आपण सर एक पण 2-4 वेळा घ्यायचं आहे. हा, सर सर पण जे ए त्याला तर आ बोलतो ना आपण ह्याच्यात. माय ना एक आहे, ए म्हणजे आज आहे ना. नाही नाही, प्रोनाउन्सिएशनला. हा, तर जे याच नाही होणार का? नाही नाही नाही, याच हे जस्ट एक्झाम्पल दिलं. याच हे बघू नको. दिस इज रॉंग. याच नाहीये, योट. योटच आहे. दिस इज जस्ट चार्ट आय हॅव डाउनलोडेड फ्रॉम गुगल. गुगल वरती तुम्ही हे नका करू. डोंट जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द गुगल. हे नाही नाही. आय विल जस्ट मी जे सांगतो तेच हे करा. जे मीन्स योट. ओके. येस सर, येस सर. हा, म्हणून. हा, आता इकडे पण मी हे का दाखवत नाही, कारण दिस यू डू नॉट गो बिहाइंड दिस. कुछ कुछ बराबर है. अभी आ बे से दिस इज करेक्ट, बट एव्हरीवेअर यू विल नॉट फाइंड आउट इट इज व्हेरी करेक्ट. ओके, दॅट्स वाय जास्त जिकडे लक्ष नका देऊ. ओके, वॉट एवर आई एम टेलिंग जस्ट ट्रस्ट ऑन मी. मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, वो सही सही पढ़ाऊंगा. वो 100% है. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो ऐसा आप मेरे ऊपर विश्वास रखो. जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, वो एकदम सही है. राइट. उसके बारे में ऐसा कुछ भी आप टेंशन लो ही मत कि उधर ऐसा दिया है आप ऐसा बोल रहे. ऐसा कुछ नहीं. अगर मैं उधर दिया है वो अगर करेक्ट रहेगा, तो मैं खुद आपको बोलेगा कि भाई उधर जो दिखा है वही है. राइट. अगर वो सही नहीं रहेगा, तो मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा. ओके, दैट इज माय ओन एक्सपिरियन्स आय एम टेलिंग यू. ओके. आता वायला पण काय येस सर. म्हणतात? वायला काय म्हणतात? इप्सिलोन. बोलो, इप्सिलोन. Epsilon. Epsilon. आणि झेडला म्हणतात सेट. ओके, सेट. बोलो वापस. कौन बोले? कोई भी बोलो चलेगा. सेट. Set. यस. सर वो त का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली नहीं आता है, लाइक द सेट. हाँ, ओनली सेट आ रहा है. हाँ हाँ, नहीं वो है ना, वो बहुत बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए. लेकिन सेट. तो अभी आपको है ना, आपको मालूम नहीं रहेगा. अभी जैसे अगर मराठी मीडियम में रहेगा ना, तो हम लोग का कैसा है? ट ठ, ट ठ. अभी दोनों में कितना फर्क है ना? ट ठ. सेट. अभी ठ बोलेगा तो अलग है, ट बोलेगा तो और भी अलग है. आर यू गेटिंग? सो ट ठ ये अलग है. तो लेकिन इधर क्या अपना है? इधर अपना है ट. तो सेट. ओके, ऐसा वो आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा. राइट. सी, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है. राइट. ये आने के लिए आपको टाइम लगेगा. राइट. इट्स नॉट. दैट्स व्हाई मैं पहले ही बोला ना, जर्मन लैंग्वेज इतना सिंपल नहीं है. और इतना सिंपल नहीं है, और इतना एकदम मुश्किल भी नहीं है. राइट. इट इज लाइक एट द मिडल लेवल. और इसके लिए मैं बोला ना कि ये जो जर्मन लैंग्वेज जो बोलता है, जो ट्रांसलेट करेगा, उसको हाईएस्ट पेड सैलरी मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली. राइट. बिकॉज दिस इज वेरी सर इंपॉर्टेंट. हाँ, बोला. सर ड्युरेशन काय असणार आहे आपल्या कोर्सचं? 52 आवर्स. 52 आवर्स आहे. तरी पण लेक्चर्स किती म्हणजे 52? नाही, अर्धे याच्या. 52 आवर्स. हाँ, यू विल सी दिस 13 वीक्स. 13 वीक्स स्पॅन आहे ना, 13 weeks. तसं बघा. 13 Okay. वीक्स अँड इवन दो इट्स आय विल नॉट फ्रीज विथ दिस. यानी 52 म्हणजे काय 52 झालं तरच असं असं काही नाही आहे. राइट. मैं सोचा है कि आपको पूरा 10 to 10 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा. आई विल टीच यू द ऑल 10 चैप्टर्स. आई विल टीच यू ऑल ग्रामेटिकल पार्ट, वॉट एवर इट इज देयर. सो यू डोंट वरी अबाउट इट.
जो आपको सर पण A1 ते and लेवल 1, लेवल 2 आणि लेवल 3 सांगितलेलं आहे. तर काय ते काय काय 52 मध्ये कम्प्लीट होणार आहे का? हो 52 मध्ये आम्ही अरे 52 आवर भरपूर झाले 52 आवर्स बहुत हो नाही गए नाही, लेवल हाँ 1 आणि लेवल 2 नहीं कोर्स दोनों सांगितलेले दोनों ते. मिलके 52 आवर्स कभी नहीं होगा लेवल दोनों एक साथ दोनों एक साथ 52 आवर्स में ऐसा कैसा होगा मग आता लेवल लेवल 1 चे 1चेच 52 52 आहे ना? लेवल 2 हां चे हां, तेच 52 म्हणून वेगळे आहे. विचारतो. हां हां, तर तेच मला अरे विचारतो. एखाद्याच्या मध्ये असं जोडी आहे ते मॅक्सिमम बोनच्या म्हणून आपण पुढे गेलो म्हणजे सर नमस्कार. हम लोग एक नया गोते इंस्टीट्यूट डालेंगे हाँ बोलो यस सर आता आमची जर एक्झाम म्हणजे एक्झाम असेल आमची मे महिन्यात, तर तेव्हा लेक्चर्स जरा असे पोस्टपोन वगैरे तुम्ही करू शकाल का? हाँ करणार ना का नाही करणार वी विल अगेन स्टार्ट विथ जून वी विल ब्रेक दैट ओके. टाइम एंड आफ्टर ब्रेक वी हां, विल स्टार्ट ना ठीक आहे सर. तो धन्यवाद. ऐसा है ऐसा सोचो मत ये आपका आप ऐसा सोचो मत लेट से अगर है ना आपका ये वीक में ना टर्म टेस्ट है सपोज ओके सो टर्म टेस्ट रहेगा और आपने मुझे बोला कि सर ये टर्म टेस्ट है तो यू प्लीज डू नॉट टेक दिस लेक्चर इन दिस वीक सो इट्स ओके वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीक ठीक आहे सर. आर धन्यवाद. यू गेटिंग हॅलो सर ऑफलाईन असणार आहे? ऑफलाईन महिन्यातनं एकदा मी लास्ट टाइम बोललो ना महिन्यातनं किंवा दीड नाही सर, महिन्यातनं मी एकदा नव्हतो फक्त मागच्या वेळेला. काय म्हणतो ओके. हा ना मागच्या वेळी तू मी नव्हता लास्ट टाइम बरोबर होतो. ओके हो हो. येस 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 ऑफलाईन सर सी तुम्ही वसईला ऑफलाईन राहता का? आपण येस 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 मी वेअर डू वसईलाच यू राहतो. स्टे मी अरे वसईला कुठे राहतो. राहतो एव्हरसाईनला. एव्हरशाईनला ओके यू स्टे ऍट द वसई हां, साइड मी ईस्टला. वसई गावात कोर्ट माहिती अच्छा. कोर्ट हो हो. आतमध्ये आपलं. हा वसई कोर्टाच्या पाठीमागे राहतो मी ओके. ओके सो यू विल मीट ना यू मीट मी इन द कॉलेज ऑल्सो येस आय सर. कम ओव्हर शुअर, देअर शुअर. ना तर हो ना सर. कॉलेजमध्ये आमचे आता सध्या खूप इव्हेंट चालू आहेत आव्हान चालू हो, आहे माहिती आहे झील सर. चालू आहे आमचं सगळे आमचे तिकडेच आहेत मित्र हा मग वर्तकमध्ये. तू एक काम कर ना आता मंडेला मी नाहीये ट्युजडेला यू मीट मी ना सर मी नेरूळला असणार आहे तेव्हा. अच्छा हा तू कॉलेजला असेल ठीक आहे मग हां. एनी हां सर. वेन सॅटर्डे वेन संडे एव्हर मी यू विल सुट्टीवर असतो. मग सॅटर्डे संडे असते ना तू कधीतरी कोर्टाच्या इकडे आणि भेट मला कधी पण असं फोन कर शुअर मला सर. की सर मी शुअर, इकडे येतोय शुअर. हा हो ओके सर. ओके फॉर ठीक शुअर. आहे लेट्स कम्प्लीट इट पहिले अल्फाबेट कम्प्लीट करूया आता परत आपलं ते ब्रेक नको हा ए उमलाउट सी ए आणि हे जे आहे ना डबल कोट्स इन इन कॉम्प्युटर लँग्वेज वी आर सेइंग डबल कोट्स राईट डबल कोट्सला काय म्हणतात माहिती उमलाउट उमलाउट ओके उमलाउट म्हणतात आर यू गेटिंग नाव उमलाउट ए उमलाउट कळलं ए उमलाउट उमलाउट म्हणजे डबल कोट्स ए च्या वरती दो दांडे मारने का तो अभी ये कैसा मालूम है ये जो है ना दीज आर वॉवेल्स इन जर्मन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दीज आर वॉवेल्स इन जर्मन इंग्लिश में वॉवेल्स कौन से है A E I O U सबको मालूम है 5 वॉवेल्स है इधर क्या है 3 वॉवेल्स है A O U समझ में आ रहा है आपको एनीवन हेलो येस सर. हाँ यस सो अभी ए उमलाउट का ट्रांसलेशन कैसे अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे ए ओनली आर यू गेटिंग येस सर. हाँ ए उमलाउट है ना उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे ए नाउ ओ उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन करोगे ऑ ए ये लेटर दिख रहा है आपको ऑ हो सर. ओ. ओके ओ umlaut. एंड यू हाँ यू उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन करोगे यू य यू यू इज इट करेक्ट येस सर. हाँ सो ए आ सर यू यू म्हणजे य ला य जोडून ना? य ला य जोडून करेक्ट यू उमलाउट हा यू उमलाउट ओके आणि एसेट दिस इज एसेट आपण आता अगोदरच बघितलेलं ओके इज इट ओके हॅलो येस सर. Yes, sir. ओके नाउ लेट्स रिपीट आफ्टर मी हा ओके कोण बोलेल एनीवन मी हॅलो बोलतो. मी बोलतो. हाँ येस हाँ बोला आ आ. बे बे. से से. से से. स नाहीये नुसता खाली स नाहीये त स आहे ना से से. हा डे डे. ए ए. एफ एफ. गे
गे, हा, हा, ई, ई, योट, योट, का, का, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पे, पे, कू, कू, एर, एर, एस, एस, टे, टे, ऊ, ऊ, फाऊ, पाऊ, वे, वे, एक्स, एक्स, इप्सिलोन, इप्सिलोन, सेट, सेट, ए, ए, आ, ऑ, यू, यू, एसेट. एसेट. Okay, so this is very very important. Anyone wants to try? सर Hello. सर तुम्ही एप्सिलॉनला कोणते एक वर्ड मध्ये यूज करून एक्झाम्पल देऊ शकता का एप्सिलॉनला? नाही, एप्सिलॉनला असं एप्सिलॉन नाही म्हणत, असं एप्सिलॉन नाही, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ना, जसं जे ना योट, सो जे आला की योट असं नाही म्हणत, आरोकडे जे आला की योटच पाहिजे असं नाही, राईट. इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड विच यू विल मेक इट. पूर्ण वर्ड जेव्हा तुम्ही मेक कराल ना, तेव्हा वेगळं प्रोनाउन्सिएशन होणार त्याचं. त्याच्यामध्ये इप्सिलॉन असं नाही होणार, किंवा झेड म्हटलं की सेट असं नाही होत. आता फॉर एक्झाम्पल यू कॅन जस्ट सी ना, झॉय आता आपण काय बघितलं. सो इज इट लाइक सेट WEI, ऐसा नहीं है ना कुछ. ये प्रोनाउंसिएशन कैसा हो गया, ज्वाय, झ, य, ऑय, ज्वाय, ऐसा हो गया ना प्रोनाउंसिएशन. सो इसका Yes, sir. मतलब ऐसा नहीं कि जेड है तो स्टेट आएगा, वाई बीच में अगर रहेगा तो इप्सिलोन करके ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है. बट ओनली वाई है ना, ओनली वाई. अगर आपको खाली एक ही लेटर बोलने का है, सो खाली एक लेटर बोलने का है तो इप्सिलोन ही बोलते हैं उसको, राइट. इप्सिलोन. अभी मैंने इतना बड़ा ऐसा इप्सिलोन लिखा है, इसके लिए इप्सिलोन इप्सिलोन हो गया, बट फॉर देम इट इज वन लेटर, इट इज वन लेटर. सेट, इट इज वन लेटर ओनली. ये भी मैं मराठी में लिखा है, इसके लिए इप्सिलोन ऐसा हो गया ना, राइट. इवन इफ यू राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, तो EIPSLON ऐसा लिखना पड़ेगा, इप्सिलोन. बट फॉर देम वाई इज ओनली वन लेटर, एक ही लेटर है. अभी जैसे एसेट है ना, एसेट, लेकिन ये एक ही लेटर है, एसेट. ए उमलाउट, अभी उमलाउट, राइट, लेकिन उसको खाली ए ही बोलते, ARU, एसेट. ओके. अभी ये सारे चीजें ना, यही सारी चीजें अगर हम लोग कैसा, जैसे हम लोग ने बोला था ना, ABCDEFGHIJKLMNOP, अगर ऐसे ही हम लोग ने ना जर्मन में आपको पढ़ना है, राइट. सो आपको ये जर्मन का गाना हे करना पड़ेगा, राइट. सो आई थिंक, आई डोंट नो, YouTube, there may be some songs like German alphabets. So let's see it first. Alphabet song. We will take very simple one. GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9. Can you listen this? I will share only tab so that you will come to know. Please tell me whether you can able to listen this voice, हाँ? आवाज आ रहा है? येस. हो सर, येतोय. ओके. Yes, sir. एकदम सिंपल आहे बघा. Jetzt kann ich mein ABC von Buchstaben A bis Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z. Okay.
अभी ये गाना का दूसरा पार्ट ये जो है ना वो अलग है, येट्स कानिश माइन आबे से, आई कैन मेक एबीसी लाइक दैट, ओके। तो वो छोड़ो, बट यू गॉट द प्रोनाउंसिएशन नाउ। हेलो, यस सर। देखो Yes, इधर sir. Yes, sir. Yes, sir. वाई को इप्सिलॉन नहीं बोलते, वाई को इप्सिलॉन नहीं बोलते, जेड को सेट बोलते हैं, वी को फाउ बोलते हैं, जे को योड बोलते हैं, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई इसके लिए आपने बोला ना याच वगैरह वो गलत लिखा है, वो अगर आपने गूगल किया और अपने इमेजेस देखा तो इमेजेस से मैंने एक इमेज लिया था, दैट्स व्हाई इट वाज देयर, बट डोंट लुक एट दैट, ओके। आई विल टेल करेक्ट ओनली, okay। So this is very very important, okay। So today if you see, then let's say here, okay, I will not share the screen, 1 second। now ये pronunciation जो हम लोग ने अल्फाबेट अभी सीखा है वो किधर काम में आएगा। let's say if I want to write a name of the spelling of your name, for example if I say Bhakti, you are there, hello। Yes, sir. हाँ Bhakti, can you spell your name in German language। In German, हा आता बघ कसं होणार माहितीये, बे हा आ खा टे ई, Be, आर यू गेटिंग। Ha, A, K, T, टी E. टी आहे का, टीला टी म्हणतात का, टे। Te, हा. हा ते नाही, Be, टे टे ट ट। Te. Okay. हा Be, Ha, A, Te, हा K, क नाही, E. का Ka, E. हा कळलं। ई म्हणजे हा आय, हा ई म्हणजे आपला ई नाही, दिस इज नॉट ई, आर यू गेटिंग, दिस इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई दिस अल्फाबेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if anybody anyone tell you, ask you write your name, I will tell you, I will dictate you, so they will not say, जैसे अभी मेरा नाम है ना, YOGESH, है ना, अभी मेरा नाम है, और if they want to spell, so what I will say, the I will say, epsilon o g a s ha, so this is what I will spell my name, राइट। बट लिखते समय में इप्सिलॉन वगैरह ऐसे नहीं लिखूंगा, लिखते समय में YOGESH ऐसे ही लिखने वाला हूँ। जैसे अभी इंग्लिश में कैसे मैं बोल रहा हूँ YOGESH, ये इंग्लिश में ना, अभी इंग्लिश का हम लोग को आदत हो गया है, राइट, इसके लिए मैं इधर ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना फाइल मेनू, अभी ये फाइल मेनू है ना अपना, फाइल मेनू, लेकिन इंग्लिश जर्मन में अगर सेम फाइल को फाइल बोलने का सपोज, एंड आई वांट टू राइट इट, आई वांट टू स्पेल दैट फाइल FILE, तो अगर मेरे को जर्मन कोई रहेगा आदमी, तो उसको मेरे क्या बोलना पड़ेगा, एनीवन वांट्स टू ट्राई, एफ ला काय म्हणतात, एफ, आई को क्या बोलते हैं, ई। यस, सो FELA, this is actually the spelling of these particular letters, and that's why our German letters are very very important, okay। so हम लोग को नाउ नेक्स्ट, अभी जो हम लोग बैच नेक्स्ट हम लोग जब भी हम लोग क्लास लेंगे उसके पहले हम लोग को ये इसका एक्सरसाइज करने का है। हाँ बोला सर, ऍपचा उच्चार आपला नॉर्मल इंग्लिश सारखाच होतो का ऍप? एफ 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 सारखा एफ, आणि इंग्लिश एलचा मध्ये एल, हा एलचा एल, एलच होणार ना? एल एल एलच होणार। हे इकडे बघू नका, हे बघू नका, मी जे हा, हा, मराठीत नाही दिले ते ते, म्हणून- हा. आणि जे लिहिलं नाहीये ना, मी जे लिहिलं नाहीये ना ते आपलं इंग्लिश आता हा, पण आता हा येणार, हा एच म्हणजे हा, ओके। बाकी आता हे LMNO पे, ओ ओ म्हणजे ओ, दिस इज पे, प, कळलं, दिस इज कू, एर, एस, थे, उ, फाऊ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए ऑ यू एसेट। हाँ लक्षात घ्या, मी अगेन मैं रिपीट करता हूँ लास्ट में, A B C D E F G, हा ई योट का, LMNO पे, क्यू एर एस थे, उ फाउ वे, एक्स इप्सिलॉन सेट, ए ओ यू सेट, ओके। इसका आपको प्रैक्टिस करने का। सर झेडला काय म्हणतात? सेट, हे बघा इकडे लिहिलंय मी, सेट, त स, सेट आणि ट, शेवटला ट आहे,
Sit. Set. Okay, set. Is it okay? समजला का आता? Hello. हो सर. Okay. So now, see, now let me repeat. Okay. Again, what are the points we have taken? Okay. स्टार्टिंग मध्ये, कारण सी एक ही लेक्चर में हम लोग सब कुछ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कोशिश किया, देन इट विल बी वेरी वी हैव टू डाइजेस्ट एवरीथिंग. डाइजेस्ट का मतलब है हम लोग को एंड तक जो पहले सिखाया है, अभी हम लोग है ना, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट. वॉट एवर वी आर लर्निंग नाउ, वी हैव टू रिमेम्बर टिल द एंड ऑफ अवर द होल सेशन. यानी A1 सर्टिफिकेशन जब भी तक मिलता नहीं, तब तक हम लोग को ये सारी चीजें ध्यान में रखने का है. अदरवाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो पर्सनल प्रोनाउन है अल्फाबेट से और वॉट एवर वी आर स्टार्टिंग में हम लोग जो ले रहे हैं, राइट, इट शुड नॉट हैपन कि पुढचं पार्ट मागचं सपाट, यानी आगे आगे हम लोग जा रहे हैं और पीछे पीछे हम लोग भूलते जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो लेट्स कवर. या कोर्सला सर्टिफिकेशन काय मिळणार? काय म्हणतो? या कोर्सचं सर्टिफिकेशन काय मिळणार आहे आपल्याला? मिळणार ना. या कोर्सचं सर्टिफिकेशन आपण देणार नाही इकडनं, राइट. सर्टिफिकेशन मिलनार म्हणजे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर मैक्स मुलर भवन और गोथे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको ये पूरा का पूरा परफेक्ट रिमेम्बर करने का है, राइट. ओके सर. समज. सर कारण का जर्मन जायचं असेल तर काहीतरी B2 लेवल ते लागणार आहे असं काहीतरी ऐकलंय मी. B1 का B2 लागणार आहे? A1 A2 B1 B2, पण A1च सांगतो ना, A1 and A2 ना, त्याचं ग्रामरच भरपूर मोठं आहे, समजलं का? सो जसं हम लोग पुढे आगे आगे जाएंगे ना, तभी वैसे वैसे आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा, कितना स्पीड से जाने का है, कितना स्लो में जाने का है. आर यू गेटिंग? तो ये तो अभी खाली शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट कि ये क्या है, राइट. तो अभी खाली हम लोग ने प्रोनाउंसिएशन का और ये पर्सनल प्रोनाउन का खाली झलक देखा है, वी कैन से, राइट. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा. तो कहने का मतलब ऐसा है, नो, आई हैव फिट द होल कोर्स इन 52 आवर्स इन सच अ मैनर दैट हर एक आवर और हर एक लेक्चर, अभी 2 घंटे का रहेगा तो 2 आवर्स होंगे, फिर भी 2 आवर्स का और 1 घंटे का, वॉट एवर इट इज देयर ना, आपको ज्यादा डाइजेशन, यानी ज्यादा आपको यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग. तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट गो इन सैचुरेशन लेवल. सर एकदा डब्ल्यूचं प्रोनाउन्सिएशन करा ना. हाँ, डब्ल्यूचं प्रोनाउन्सिएशन है वे. वे, आई विल राइट हियर व आणि ए, वे. करेक्ट? हेलो. ओके. हाँ ओके. हाँ बस. Okay, so now see, I will just repeat everything. Okay, so the first one is like Vorstellen Sie bitte. Okay, so Vorstellen Sie bitte, we have seen introduce yourself, and the just a pronunciation, for pronunciation point of view, we just put like this, like Hallo, Guten Abend, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Ich heiße Yogesh. Mein Name ist Yogesh. Ich bin Yogesh. Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Wassai. Was lernst du? Ich lerne deutsche Sprache. Woher kommst du? Ich komme aus Wassai. Ich bin in 2 Semester Klasse. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Ich bin gut. Es geht. Prima. Sehr gut. Right? And then there is a personal pronoun, so like singular and plural. So it is like this: ich, du, er, sie, wir, ihr, sie. Okay, and now the alphabets are like this: a b c d h, sorry, a b c d e f g h i j k l m n o p Q R S T U V W X Y Z A R U Z, राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों ने जितना लिया है उतना आप पूरा प्रैक्टिस करो. ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.